Now we will discuss the activity 6.1 of your NCERT book, that chlorophyll is necessary for photosynthesis. For this activity, first we write the aim, and the aim is saying that to show that chlorophyll is necessary for photosynthesis. After that, we write the requirements of this. For this, we require a potted plant, a glass which covers that potted plant, iodine solution. Then there is a procedure. A short form of that procedure is written over here. I'll explain it to you in the detail. First we'll take a potted plant and make it de-starch. सबसे पहले हम एक potted plant लेंगे और उसे de-starch करेंगे. De-starch composed of two words. First is de and second is starch. This de means removal, and starch is the reserve food of the plants which is formed during photosynthesis. That means the removal of starch present in the leaves or present in the plant is referred as de-starching. For de-starching, what we do is we kept the plant in a completely dark room for 3 to 4 days. इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, एक potted plant लेंगे और उसको एक completely dark room में रखेंगे 3 से 4 दिनों के लिए. अगर हम इससे ज्यादा दिन के लिए रखेंगे then plant will die. After the de-starched potted plant, we keep that de-starched potted plant in the sunlight for few hours. After that, we pluck a leaf. हम एक लीफ को तोड़ेंगे, उस लीफ को अल्कोहल में डालकर बॉयल करेंगे. यहां पर हमें एक प्रिकॉशन का ध्यान रखना है. One precaution we must have to keep in mind is that do not boil directly. हम अल्कोहल वाले बीकर को डायरेक्टली फायर पर नहीं रखेंगे, as alcohol is highly flammable. अल्कोहल हाईली फ्लेमेबल होता है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, इसलिए हम अल्कोहल में डालकर डायरेक्ट उसे फायर के कांटेक्ट में नहीं लाएंगे. हम क्या करेंगे, पहले उसे अल्कोहल के कंटेनर में डालेंगे और उसे एक वाटर बाथ में हीट करेंगे. आफ्टर दिस हीटिंग व्हाट वी ऑब्जर्व इज द लीव्स कलर रिमूव्ड. जो लीफ होगा उसका कलर रिमूव हो जाएगा. देन वी रिंस द लीफ इन वाटर. ड्यूरिंग द रिंसिंग व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड इज we do not place the leaf, we do not place the decolorized leaf directly into the running water. We have to pour water slowly so that the remaining chlorophyll is removed. So both of these steps are done to remove the chlorophyll of the plant. ये दोनों स्टेप इसलिए किए जाते हैं ताकि हम जो भी उस लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जो ग्रीन कलर है उस लीफ का, उसे हम रिमूव कर सके. After these steps, we obtain the leaf that is colorless. Then we pour iodine solution over it. Now, why we are pouring iodine solution? Because iodine solution is used to check the presence of starch in a substance or not. आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, in your previous classes you must have studied that iodine solution is used to check the presence of starch, for example in potato. After pouring iodine solution, what we observe is this same diagram is present in your NCERT book as well. The part where chlorophyll is present of a variegated leaf. Now the question arises, what is a variegated leaf? The leaf in which chlorophyll is present in some part and in the other part of the same leaf the chlorophyll is absent. The example of the variegated leaf plants are ivy plant, croton or money plant. This can easily available in your gardens or the lawns in the schools as well. So the part where chlorophyll is present or chlorophyll was present will turns blue-black. That means starch is formed in that part. And the part which I shows colorless, that is the white here, actually it is yellow basically, that colorless part proves us that starch is not formed here. So, and the part which remains colorless, that part which is white actually in this diagram, but actually it is yellow in the actual leaf, that part proves that there is no starch formation, as the part is colorless still after pouring the iodine solution over it. So this will prove that starch is not present here and starch is present only in the middle part where chlorophyll was present. So this activity proves that chlorophyll is necessary for photosynthesis. After this, we study the activity 6.2 of your NCERT book, that is to show that carbon dioxide or CO2 is necessary for photosynthesis. अब हम दूसरी एक्टिविटी स्टडी करेंगे जिसमें हम ये प्रूव करेंगे कि CO2 is necessary for photosynthesis. In the same and this activity, we first start with the same step. We take 2 de-starched potted plant. One more thing we must have to keep in mind. In this activity, we do not require a variegated leaf. इस एक्टिविटी के लिए हमें variegated leaf की जरूरत नहीं है. यहाँ पर हम एक normal potted plant लेंगे. We take a normal potted plant. We take them de-starch.
as we studied in the earlier activity, how we make the destarching of potted plant. We keep that plant in a completely dark room for 2 to 3 days. After the destarching of leaf, what we have to do, we have to imply our condition. डिस्चार्जिंग के बाद हमें क्या करना है बच्चों, वो कंडीशन इंप्लाई करनी है जिसकी हमें जरूरत है, दैट इज CO2 अवेलेबल ना हो और बाकी सारी कंडीशंस अवेलेबल हो. देयर आर इन टोटल 4 कंडीशंस फॉर फोटोसिंथेसिस: सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड द फोर्थ वन इज कार्बन डाइऑक्साइड. फॉर द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वी यूज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. So what we do is we place one jar one potted plant in an inverted jar having potassium hydroxide and another one without potassium hydroxide. तो बच्चों हम CO2 को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, हम एक potted plant को तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रखेंगे और एक को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बिना. Now the question which arises in your mind is why we take potassium hydroxide. अब जो क्वेश्चन मन में आना चाहिए वो क्या है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही हम क्यों ले रहे हैं, व्हाई वी आर चूजिंग KOH, बिकॉज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एयर. जितने भी इस जार में एयर होगी उस जार के CO2 कंटेंट को ये एब्सॉर्ब कर लेगा. तो इस प्लांट को वाटर भी मिलेगा जो पॉट में हमने दिया है, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे, सनलाइट भी मिलेगी, हम इसको एक कंप्लीटली ओपन एरिया में रखने वाले हैं. जो चीज अवेलेबल नहीं होगी वो क्या है, सिर्फ CO2 है. जबकि इस जार में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं है तो यहां पर CO2 भी अवेलेबल है. आफ्टर दिस वी फॉलो द सेम स्टेप्स. वी प्लक द लीफ ऑफ बोथ द प्लांट्स, देन बॉयल इट इन अल्कोहल. व्हाई वी आर बॉइलिंग इट इन अल्कोहल? टू रिमूव द क्लोरोफिल. One precaution we have to keep in mind that we do not boil the alcohol container or beaker directly over flame, as alcohol is highly flammable. हम अल्कोहल में डालकर उसे डायरेक्टली हीट नहीं करते, हम उसे एक वाटर बाथ पे रखते हैं. देन रिंस करेंगे लीफ को वाटर के साथ. वो रिंस करते हुए ध्यान रखना है कि हम उसे एक रनिंग टैप के अंदर ना रखें. नेक्स्ट आयोडीन सॉल्यूशन पोर करेंगे दोनों लीव्स पर, जो हमने पहले पॉटेड प्लांट से लिया और दूसरे से. हम देखेंगे बच्चे जिस पॉटेड प्लांट में KOH था, जब हम उसमें आयोडीन सॉल्यूशन पोर करेंगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा. दैट मींस नो स्टार्च फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. स्टार्च फॉर्मेशन टेक्स प्लेस नहीं हुई. देन इन द सेकंड potted plant's leaf, the leaf of the potted plant which does not contain KOH will turn blue black. That means here CO2 is available along with the other requirements and photosynthesis takes place, which results in the formation of glucose, which turn stored in the form of starch. And in the presence of starch, the color of iodine solution changes to blue black. So this will prove that for photosynthesis, CO2 is necessary along with the other activities. So this is the activity which prove that CO2 is necessary for photosynthesis. Third activity, we discuss that sunlight is necessary for photosynthesis. How will you show that sunlight is necessary for photosynthesis? This activity is not given in your NCERT book as such, but it is written as a question in your NCERT book lines. So for this, we follow the same procedure. We take a potted plant, we make it destarch by keeping it a dark room for 2 to 3 or 3 to 4 days. Then in this, we cover some portion of one leaf by a black paper on the upper side as well as on the lower side. हम इस कंडीशन की एक्टिविटी के लिए, इस एक्टिविटी की कंडीशन के लिए क्या करेंगे बच्चों, एक लीफ को, कोई भी एक या दो लीफ को ब्लैक पेपर या ब्लैक चार्ट पेपर या एल्यूमिनियम फॉइल से कंप्लीटली रैप कर देंगे. इतना अच्छे से पेस्ट करना है कि कोई भी सनलाइट जाने का चांस ना बचे. और लीफ के दोनों तरफ करना है, अपर पोर्शन पर भी और लोअर पोर्शन. देन वी कीप दिस सेटअप इन द सनलाइट फॉर few hours. Then same, we pluck that partially covered leaf, we boil it in alcohol. Same, why we are boiling it in alcohol? To remove the chlorophyll. हम डायरेक्टली नहीं रखेंगे क्योंकि अल्कोहल हाईली फ्लेमेबल है, इससे ये फायर कैच कर सकता है और हमारा एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं हो पाएगा. वाटर बाथ में डालकर हीट करना है. नेक्स्ट रिंस करेंगे लीफ को, रनिंग वाटर के नीचे नहीं करना, ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर पोर करना है. आफ्टर दैट वी पोर आयोडीन सॉल्यूशन ओवर इट. After pouring iodine solution, what we observe, the part which was uncovered, वो part जो uncovered था will turns blue black.
That means sunlight is available in that part, and due to that sunlight, it performs photosynthesis, which results in the formation of glucose, and glucose is stored in the form of starch. तो हम देखेंगे बच्चे कि जो पार्ट कवर नहीं था वो ब्लू ब्लैक हो गया आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद. दैट मींस स्टार्च प्रेजेंस इज कंफर्म. और जिस पार्ट को हमने कवर किया था पार्शियली वो ब्लू ब्लैक नहीं हुआ. दैट मींस वहां स्टार्च फॉर्म नहीं हुई. So this is the activity which shows us that sunlight is necessary for photosynthesis.